सर्व पवित्र स्तो वैष्णव्यो सवितुर्भाव प्रसवत् गुणाम छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मि वेद दशते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यत्कामः पुने तज्जज्ञेयं मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसादेयः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीः माम् ओम चित्पतिर्मा पुनातु वाग्पतिर्मा पुनातु सविता मा पुनात्व छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः दश्यते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यत्कामः पुनीतच्छकेयं मा ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाहजाभ्यन्तरः शुचि ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम चिद्रूपिण महामाय दिव्यतेजस्वन्विते तिष्ठदेविष्कामते तेजोवृद्धिं कृष्णमयं पृथ्वीत्रयार्ता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारय माधवी पवित्रं गुरु चाषणम् ऐसा शुद्ध कर करे। उसके बाद आप चंदनम विन्दते नित्यम पवित्रम पापनाशम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। ये चंदन आदि करके पूर्वामुख हो करके बैठ जाएं और उसके बाद सूर्य आदि विष्णु की पूजा हो सके तो कर लें। और गायत्री संध्या करने के बाद सूर्य आदि विष्णु और की पूजा के बाद ये जो है सो 5-4 जो है सो करना चाहिए आचमन। ओम आत्मतत्वं शोधयाम नमः स्वाहा ओम ह्रीं विद्यातत्वं शोधयामि नमः स्वाहा ओम क्लीं शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। उसके बाद जो है सो संकल्प करना चाहिए। ओम विष्णुर्विष्णुर् हरिर् हरिः ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे से श्वेत बारह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथानाम संवत्सरे अमुकायने महामांगल्यप्रदे मासानामुत्तमे अमुके मासे अमुके पक्षे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरान्वितायाम अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते सूर्ये अमुकामुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिषु सत्सु शुभे योगे शुभकर्णे एवं गुण विशेष विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथो सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक शर्माहम ममात्मनः सपुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नव दुर्गानुग्रहतो ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम श्री नव दुर्गा प्रसादेन सर्वापन निवृत्ति सर्वाभिष्ट फला वाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम सापोद्धार पुरस्सरम कवचार गला कीलक पाठ वेदोक्त रात्रि सूक्त पाठ न्यास विधि सहित नवार्ण जप सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग संध्यान पूर्वकम च मार्कंडेयवाच सावर्णिस्वतनियो जो मनु कथ्यतेष्टम इत्याद्यारभ्य सावर्णिर्भविता मनु इत्यंतम दुर्गा सप्तशती पाठम तदंते न्यास विधि सहित नवार्ण मंत्र जपम वेदोक्त देवी सूक्त पाठम च करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करके उसके बाद जो है सो जोनी मुद्रा दिखा करके और किताब को जो है सो आधार शक्ति पर में पीठासन पर में स्थापित करके और पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सापोद्धार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं लेकिन अगले प्रकार से हम करते हैं सापोद्धार। पहले हम पुस्तक पूजा करेंगे। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मताम। इस मंत्र से हम पुष्प लेकर के जो है पुस्तक की पूजा करते हैं। उसके बाद सापोद्धार है। सापोद्धार मंत्र है ये ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र विमोचन मंत्र से वशिष्ठ नारद संवाद संवेदाधिपति ब्रह्मांड ऋषि सर्वेश्वर कारणे से दुर्गा देवता चरित्र त्रयम बीजम ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका सा विमुक्तो मंग संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ऐसा पढ़ के पानी गिरा देना है। उसके बाद ओम ह्रीं ह्रीं रेत स्वरूपिणी मधुकैटम मर्दिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपिणी महिषासुर सैन्य नाशिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम रंग रक्त स्वरूपिणी महिषासुर मर्दिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम छुंग क्षुधा स्वरूपिणी देव वंदिता ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम छांग छाया स्वरूपिणी दूत संवादिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम संग शक्ति स्वरूपिणी धूम्रलोचन घातिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम त्रिंग त्रिखा स्वरूपिणी चंडमुंड वधकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम छांग छांति स्वरूपिणी रक्त बीज वधकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव।
ओम जांग जाति स्वरूपिण्ये निशुंभवदकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम लंग लज्जा स्वरूपिण्ये शुंभवदकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम शांग शांति स्वरूपिण्ये देवस्तुत्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम श्रंग श्रद्धा स्वरूपिण्ये सकल फलदात्रिये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम कांग कांति स्वरूपिण्ये राजवर प्रदाये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम मांग मातृ स्वरूपिण्ये अनर्गल महिम सहिताये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम ह्रीं सिंह दुंग दुर्गाये संग सर्वेश्वरकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाये अवेद्य कवच स्वरूपिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम क्रीं काल्ये काले ह्रीं फट स्वाहाये ऋग्वेद स्वरूपिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः। इत्येवं हि महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वर चण्डी पाठं दिवारात्रो पूर्जादेव न संशयः। एवं मंत्रं न जानाति चण्डी पाठं करोति यः आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्जान्न संशयः। इस प्रकार जो है सो शापोद्धार करने के बाद कवच पाठ। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा चामुंडा देवता गण्या सूक्त मात्रो बीजम दिगवं देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तति पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै मार्कंडेय वाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतिता उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना गृह्णादायमानस्तु शत्रुमध्ये गतुर्णे विस्मय चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किंचिदस्मं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि जयस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां हृदि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराहि महिषासना इन्द्रिय गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषभाना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्रा सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रत्नारूढ़ा दिव्या क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिमलं च मुष्लायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुंपास्मेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च सार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानि इदं देवानां च हिताय वै नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनि त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु माम् इन्द्रियाग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रतीच्यां वारुणि रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनि उदिच्यां पादुकौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ततस्ताद् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुण्डा समवाहना जयाम चाग्रतः पादविजया पादपृष्ठता जिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् मामर्दिनी व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये जमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्योर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उदरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चेवकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकां नलकूपड़ी स्कन्धयो खड्गनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अंबिका चाङ्गुलीषु च नखां शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी हस्तनो रक्षेत् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा बोधना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानूनी विन्दवासिनी जंगे बावला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फे नारसिंही च पादृष्टे तु तेजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राकडाली च केशः सैमूर्ध्वकेशिनी रोमकूपे सुकौवेदी त्वजम्बागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्तमेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कवे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामविद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेण मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानोदानं च स्वानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् बाणं कल्याण शोभनारसे रूपे जगन्ते च सुभदे स्पर्शे च योगिनी दत्तं रजस्वंसेव रक्षेत् नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् वसून् मे रक्षेत् चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु वैर्वी बन्धानां सुवता रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता
रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं लक्ष्मी देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेत् शुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरजमतलं प्राप्स्यति भूतलेपमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्या कवचेनावृता पुमानि तं तु दिव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं जः पठेत् प्रियतो नित्यं श्रीसन्ध्यं श्रद्धयान्विता दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेद् वर्षतं सागमत् मृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं देवा कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचरा सेवदलजा सोपदेशिका साजा कुल्या मालाड अग्निशाग्नि तथा अंतरिक्षचरा घोड़ा डाकिन्यस्य महाबला ग्रहभूत पिशाचा स यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नति भवेत् राज्ञः तेजो वृद्धि करं ब्रह्म यशसा वर्धते शोभि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सरस्वतीं चन्नीं कृत्वा तु कवचं पुरा जावत् भूमण्डलं दत्ते ससेलवन् कारणं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्र की देहान्ते परमं स्थानं जत्सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते दिति दिव्या कवचं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुरस्य अष्टोक छंदा से महालक्ष्मी देवता से जगदम्बा प्रीतये सप्तति पाठांगत्वेन जपे विनियोगा ओम नमः चंडिकायै मार्कंडेय वाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली गपार्णी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमस्तुते मधुकैट विद्रा विविधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय महिषासुर निर्णासी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय रक्तबीज वदे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय शुंभस्य विनिशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय वंदितांग्रये देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय चिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय अस्तु वद्यो भक्तिपूर्वं तां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय चंडिके सततं ये त्वामर्चन्ति भक्तिदा रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय विधेहि दिशानासं विधेहि बलमुज्जगे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय सुरासुर शिरोरत्न निगृहचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय प्रचण्डरीत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय चतुर्भुजे चतुर्भक्त संसुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय कृष्णेन संसुते देवी सद्भक्त्यादनाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय हिमाचल सुतानाथ संसुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय इंद्राणी परिषद्वा पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय देवी प्रचंड दोरदंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय देवी भक्त जनुद्दामा दत्तानंदो देयंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय पद्मिं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवां इदम् अस्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तति संख्यां वर्वाप्नोति सम्पदाम् इति दिव्यार्गलास्तोत्रं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ कीलकम् ओम श्री कीलक मंत्रस्य शिवस्य शुभ छंदा श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तति पाठांगत्वेन जपे विनियोगा ओम नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः स्वमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मंत्राणाम् अभिकीलितं सोभिक्षां भवाप्नोति सतं जापे तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि तेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो न दं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसङ्कामिमाङ्गः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार स समाप्तिर्न च पुण्यस्य तं यथावन्यन्त्रणां सोभिक्षां भवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति तं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलं विधायनं नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धा स गणा सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यर्थस्तस्य वयं क्वापि ह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्बाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललना जने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं जनिस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुचिके भवति समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्षास्तु यतेषा न किञ्जने ओम देव्या कीलक स्तोत्रम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। उसके बाद जो है वेदोक्त रात्रि सूक्तम अथ वेदोक्तम रात्रि सूक्तम ओम रात्रि इत्यादि अष्टस्य सूक्तस्य कुशका सौभ्रो रात्रिवा भारद्वाजो ऋषि रात्रि देवता गायत्री छंदा देवी महात्मा पाठे विनियोगः
ओम रात्रि व्यक्षदायति पुरुत्रा देव्यक्षभि विश्वा अधिश्रियोधिता और बप्रा अमर्त्या निवतो देव्योद्वद ज्योतिषा बाधते तमा निरुस्सारमस्कृतो सम देव्यायति अपि दुहास्ते तमः शानो अद्य जस्या वयन नीते यामन नभिक्षमहि वृक्षेण वसतिं वयः निग्रामासो अभिक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणा नियसेना सस्तिदर्थिना यावया वृक्यं वृकं यवयस्तेन मूर्मिये अथानः सुतरा भवौ उमापेपि शत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थिता उश्रीणेव यातया उपतेगा इवाकरं दृढ़ दिवा रात्रि सोमम न जिज्ञ से ये वेदोक्त रात्रि सूक्त है। इसको जो न पाठ करने में जो समर्थ न हो वो तंत्रोक्त रात्रि सूक्त इसका पाठ करें। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्री में स्थिति संहार कारणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरतलां देवसा प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वाहा त्वं विभटकार स्वरात्मिका स्वधा त्वमक्षरे नित्ये तथा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यानुचार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमक्षन्ते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वं सृष्टिरूपा च पालने तथा संहृत्य रूपान्ते जगतोस्य जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृति त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोढ़ारात्रि सदारुणा त्वं शेषत्वं ऐश्वर्य त्वं हृष्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा जापुष्टि तथा तुष्टि त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गनी शूलिनी घोड़ा गदनी चक्रणी तथा संगणी चापनी वाना वसुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा से सौम्य बृहस्पति सुंदरी परापरानं परमा त्वमेव परमेश्वरी जच्च किंचित् क्वचित् वस्तु सद सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य जा शक्ति साधुं किमस्तु यस्य तदा यात्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यति जो जगत् शोभि निद्रावसं नीतकस्तमस्तोतुं ईश्वरा विष्णु शरीर ग्रहण महमीशानेव च कारितास्ते जतो तस्त्वं कास्त्वं शक्तिमान् वेत्सा त्वमित्तं प्रभाव ऐश्वर्योदारेण देवी संस्था मोहयेतु राधर्खा वसुरो मधुकैटवो प्रबुधं च जगत्स्वामी नियता मच्युतो लघु बुधस्य क्रियातामस्य अंतुमेतो महासुरो इति देव तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम श्री जगदम्बार्पणम अस्तु। उसके बाद जो है सो नवार्ण मंत्र का जो है नवार्ण विधि करना चाहिए। जैसे ओम श्री गणपति जयति ओम अस्य श्री नवार्ण मंत्र से ब्रह्म विष्णु रुद्राणस्य गायत्री श्री गणपत छंदांस से महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोग करना चाहिए। उसके बाद ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि ओम गायत्री श्री गणपत छंदोभ्यो नमः मुखे ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय बीजा नमः गुह्ये ह्रीं शक्ते नमः पाद्यों क्लीं कीलकाय नमः नाभुवम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्णिभ्यां नमः मध्वाभ्यां नमः चामुण्डे नामिकाभ्यां नमः विच्चे कनिष्ठाभ्यां नमः ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डे विच्चं गर्दकर्पृष्ठाभ्यां नमः ऐं हृदयाय नमः ह्रीं शीर्षे स्वां क्लीं शिखायै वकट ओम चामुण्डायै कवचाय हुं ओम विच्चे नत्राय वकट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डे विच्चे स्थाय फट ओम ऐं नमः शिखाय ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे ओम चांग नमः दक्षिण कर्णे ओम नमः वाम कर्णे ओम डांग नमः दक्षिणासापुटे ओम ऐं नमः वाम नासापुटे ओम ह्रीं नमः मुखे ओम चैं नमः गुह्ये ओम ऐं प्राच्ये नमः ओम ऐं आग्नेये नमः ओम ह्रीं दक्षिणाये नमः ह्रीं नैऋत्ये नमः ओम क्लीं प्रतीच्ये नमः ओम क्लीं चामुण्डायै ओम चामुण्डायै उदिच्ये नमः ओम चामुण्डायै शान्ये नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डे विच्चे ऊर्ध्वायै नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डे विच्चे भूम्यै नमः। उसके बाद ध्यान करना चाहिए। ओम खड्गम चक्र गदे सुचाल परिगान शूलम भुसंडिम शिरा शंकम संदततिम करे श्रेणानाम सर्वांग भूषा वेदाम नीलास्मद्युतिमास पादतस्नाम सेवे महाकालिकाम यामतस्वपिते रोगमलजो हन्तुम मधुम कैडवम अक्षस्रक्परसुम गदे सुकुलि संपदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं वास सुदर्शने च दतिम हस्ते प्रसन्नारणां सेवे सैरिभमर्दिने महालक्ष्मीं सर्वजस्थितां घट्टाशूलानां निशङ्कमुस्ले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दतिं गणान्तविलसच्चिदां तुल्य प्रभां गौरीदे समुद्भवां ते जगदाधारभूतां महापूर्वा मत्र सरस्वती मनुभजे संवादि नित्यार्थिनीम्। इसको पाठ करके उसके बाद रुद्राक्ष माला लेना चाहिए। रुद्राक्ष माला की शुद्धि माला की पूजा करनी चाहिए इस मंत्र से। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्मान् सिद्धिदा भव ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धाय ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि सर्वमन्त्रार्थ साधनि साधाय सर्वसिद्धिं परिकल्पय मे स्वाहा। इससे माला की पूजा और स्तुति करके इस पर में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे इस मंत्र का 108 या 1000 बार जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।
उसके बाद ओम सुमंत्र ओम गयाति वै गोत्रितम ज्ञान अस्मृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादं महेश्वरी जप को समर्पित करना चाहिए। उसके बाद सब सतिन्यास ओम प्रथम मध्यमोत्तर चरित्राणाम ब्रह्म विष्णु रुद्राक्ष श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता गायत्री लक्ष्मी गणेशोभा संदांसी सिद्धंदा शाकंभरी भीमा शक्तिया रक्तदंतिका दुर्गा भामर्जो बीजानि अग्निवायु सूर्या तत्वानि ऋग यजु साम वेदा ध्यानानि सकल कामना सिद्धये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम खड्गनी शूलिनी घोड़ागदनी चक्रनी तथा संगनी जापनी वाना वसुनी परगायुधांगुष्ठाभ्यां नमः ओम शूलेन पायिनो देवी पाय करियं च मिके गंडा सुनेन पायि चापज्जानि सुनेन च तरणिभ्यां नमः ओम प्राच्यं रक्तप्रतिच्यां च चंडिके रक्त दक्षिणे भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्रत घोड़ानि ते रक्तात्मं तथा भुवं नामकाभ्यां नमः ओम खड्ग शूल गदादीनि यानि चास्त्राणि ते मिके करपल्लव संगीनि ते रस्मान् रक् सर्वतः कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते ओम कर्तन कर्तव्यां नमः। ओम खड्गनी शूलिनी घोड़ागदनी चक्रनी तथा संगनी जामनी वाना वसुनी परगायुधां हृदयाय नमः शूलेन पायिनो देवी पाय खड्गेन चामिके घंटा सुनेन पायि चापज्जानि सुनेन च शिरसे स्वाम प्राच्यं रक्तप्रतिच्यां च चंडिके रक्तदक्षिणे ब्राह्मणात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वर्यं शिखाय वघटं सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोड़ानि ते रक्तास्मं तथा भुवम् ओम कवचाय ओम खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि ते मिके करपल्लव संगीनि ते रस्मान् सर्वतः नत्तत्रयाय भोकाटं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते ओम स्राय फट् ओम विद्युद्दां समप्रभां ऋग्पति स्कन्धासदां भेषणां कन्याभे करवाल घेट विलसद्दस्ता विरासेवितां हस्ते चक्रगदासि घेट विसिकां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मण्डलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम ओम दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम इस प्रकार से करके ओम प्रथम चरित्र से प्रमाण से महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेदा स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। प्रथम अध्याय अथ प्रथमोध्यायः ओम खड्गम चक्रगदेषु ध्यानम ओम खड्गम चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलं वसुण्डिं शिराशंकं सन्दतिं कैसेनानां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासुपादस्कां सेवे महाकालिकां यामस्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम्। ओम नमः सन्निकायै ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णेश्वर तनयोजो मनुगत्यते श्रमाणि सामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गतो महामायानुभावेन यथा मनवन्तराधिप स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयोढवे स्वारोचिष्यन्तरे पूर्वं चेतवन् समुदो वा श्रुतो नाम राजाभूत समस्ते चितिमण्डले तस्य बाल्यतः सम्यक् प्रजापुत्राणि बहुसम्भवुः शत्रुबभूपा कोलाविध्वंसिनः सदा तस्य धैर्यभवद्युद्धामतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसे भेर्जितः ततः स्वपुरमायातो निदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तथा प्रबलादिभिः अमात्यैर्बलिभिः दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चाभृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृग्याभ्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हिमारुह्य जगाम गहनं वनं स्वतत्राश्रमभद्राक्षि द्विवर्जस्य मेधसा प्रशान्तः स्वापदाकीर्णं मुनिशिशोपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः तस्य विचरन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र मत्वा कृष्णचेतना मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्वृत्त्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे सुरस्ति सदा मदं हम्बै निवशं यातः कानुभोगानुपलप्स्यते जे ममानुगता नित्यं प्रसादधन भोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यज्य कुर्वन्तन्यमहिवृताम् असम्यक् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सत्तं व्ययं सञ्चिता सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सत्तं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्रासमाभ्यासे वैषमेकं ददर्श स पृष्ठस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमने त्रिकाशशोकैव कस्मात् त्वं दुर्मनाय विलक्ष्यसि इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्या प्रश्रयावनतो नृपं वैश्योवाच सवाधीनां वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः धीनश्च धनिर्दारे पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखे निरस्तश्चाप्तबन्धुवे सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थिता किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुता राजोवाच जैर्निरस्तो भवान् लुब्धे पुत्रदारादिभिर्धने ते सुखिं भवता स्नेहमनुवदनाति मानसं वैश्योवाच एवमेतद् यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वच किं करोमि न वदनाति मम निष्ठुरतां मनः जय सन्त्यज्य कृष्णयां धनलोभदैर्निराकृतः पति स्वजनहार्दं च हार्दिते स्वे मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते जत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं जन्न मनस्ते स्वप्रीति सुनिष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तो सेतो विप्रातं मुनिं समुपस्थितो समाधिर्णां वैश्योसो
समाधिर्नाम वैश्योसो स च पार्थिव सत्तमा कृत्वा तुतो यथा न्यायं यथारं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवन् स्वामं प्रष्टुमिच्छामि एकं वदस्व दुःखाय मे मनसा स्वाचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्यङ्गेशखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिषत्तमा अयं च निकृता पुत्रैर्धारेण भृत्यस्तथोज्जिता स्वजनेन च सन्त्यक्तस्ते सुहार्दि तथाप्यति एव मेस्तथाहं च द्वाप्यत्यन्त दुःखितो दृष्टदोषेऽपि विषयं मत्वा कृष्टमानसो तत्किमेतन्महाभागा जन्मो ज्ञानिनोरपि ममासि च भवति सा विवेकानन्दस्य मूढता ऋषिरोवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागा जाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिद् रात्रावन्धास्तथा परे केचिद् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टया ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गान् छावचञ्चसु कर्णमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमाणान् अपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साविलासा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृच्छ मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं शैषा प्रसन्ना वरदानेनां भवति मुक्त एषा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसार बंध हेतु सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तु ब्रह्मविदाम्बर ऋषिर्वाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तेर्दस्ये स्म भजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतो सनाभिकमले विष्णोस्थितो ब्रह्मा प्रजापते दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थिता विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्र कृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्तुति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वात्मं स्वधातुं हि वखट्कार स्वरात्मिका स्वधातुम् अक्षरे नित्येर्धा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोस्य जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रेण महारात्रेण मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रेष्ठमेश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गनी शूलिनी घोड़ा गदनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी वाना भुसुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्य बृहस्पति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु सद सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा तुं किमस्तु यस्य तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति जो जगत् सोऽपि निद्रावसं नीतः कस्त्वं स्तोतुमिहेश्वरा विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशानैव च कारितास्ते यतो तस्त्वं कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैश्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोह्यैतो दुराधर्कावसरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तांसी तत्र वेदसा विष्णुः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मना उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयना ततः स ददृशे चतौ मधुकैटभो दुरात्मानावति वीर्ज पराक्रमो क्रोधरक्तिक्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरे पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभूतावप्यति वरुणमत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरस्मत्तो म्रियतामिति केशवं श्री भगवान् उवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मम बद्ध्वा उभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापो मयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमले क्षणाभं जैन जत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता ऋषिर्वाच तथेति उक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या दिव्यास्तु भूया शृणु बदामि ते ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके हनुमंत्रे देवी महात्म्ये मधुकैटभ नाम प्रथमां श्री जगदम्बार्पणमस्तु
अथ द्वितीयोऽध्यायः। ओम मध्यम चरितस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवताष्टि छंदा साकं शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्वं यजुर्वेद स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित जपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम अक्षस्रक परसुम गदे सुकुलिसं पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नानां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिर्वाच देवासुरमवधयुद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून् महिषासुरः। ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गताः तत्र यत्रेष गरुडध्वजो यथा वृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुरदेवाभिभविस्तरं सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति। स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वा कथितं सर्वम् अमरारि विचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां गचांसि मधुसूदना चकार कोपं सम्भुस्य भृकुटिकुटिलानडो ततोति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्रां महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत। अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभुन्नाडी व्याप्तलोकत्रयं तुषा यद्भुच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येन च भवन केशा वाहवो विष्णु तेजसा सौम्येन हस्तन्योर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण च भवत् वारुणेन च जङ्घोडो नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्या कौवेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नैनत्रतयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्त देवानां तेजोराशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरं रामैसार्दिता शूलं शूलाद् विनिष्कृत्य ददौ तस्यै पिनाकदृक्चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवान् शापं भानपूर्णे तथे सुधे भद्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिप ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावतात् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालं ददौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरों कूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याः चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलो तद्वद्गेवे एकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राणि अनेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंसनम् अम्लान् पङ्कजं मालं शिरस्युरसि चापरम् अददत् जलधिस्तस्यै पङ्कजं चाति शोभनं हिम्बानवाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्यापानपात्रं धनाधिप शेषश्च सर्वनागेषु महामणि विभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेज पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादुच्चै साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोडेन कृष्णमापुरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च च कंपिरे चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामुचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुनियश्चैनं भक्ति नम्रात्ममूर्तया दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमम्रारय सन्नद्धा किल सैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधा आह किमेतदिति क्रोधादाभास्य महिषासुराभ्यधावत् तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृता सौददर्शततो देवीं व्याप्तलोकत्रयं तुषा पादाक्रान्त्या नद्भुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिता शेषपातालं धनुर्जानेश्वनेन ताम् दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रवृत्ते युद्धं तया दिव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपि दिगन्तरं महिषासुरसेनानिश्चक्षुराक्षो महासुरायुधे चामरश्चान्यश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुते षड्भिरुदग्राक्षो महासुरायुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनु पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरशिलोमा महासुरायुतानां शतैः षड्भिर्भास्कलो युधे रणे गजबाजी सहस्रोगे रणैकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत विडालाक्षो युतानां च पंचाशद्भिरथायुते युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारिता अन्ये च तत्रायुत्सो रथनागैर्वृता युधो संयुगे देव्या सा तत्र महासुरा कोटि सहस्रेस्तु रथानां दन्तीनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्रावुन्महिषासुरा तोमरेर्विन्दिपाले च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युधो संयुगे देव्या खड्गे परशु पठिष्ये केचित् च चिक्षुपो शक्तिः केचित् पाशांस्तथा तथा परे देवीं खड्गप्रहारेस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमो सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलियैव प्रचिच्छेदानि शस्त्रास्त्रवर्षिणी
अनायास्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभि मुमोचा सुरदेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुच्चटो दिव्यावाहन केसरी चचारा सुरसैन्येषु वनेष्विभूतासना निःश्वासान् मुञ्चेयांस युध्यमाना रणिम्बिका तदेव सद्य सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिसेनाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्ति उपबृंहिता वादयन्त पटहान् गणाः शङ्खांस् तथा परे मृदङ्गांस तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च सत्सो निजगान महासुरान् पातयामास सेवान्यान् घण्टास्वन् विमोहितान् असुरान् भुवि पासेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचित् द्विधाकृतास्तीक्ष्णे खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया विषेडते वेमुश्च केचिदुदितं मुसलेन वृषं हता केचिन्निपतिता भूमो भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तराः सरोगेन कृताः केचिद्रणाजिने सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्ते दशार्दना केषाञ्चित् बाहवश्छिन्नाः छिन्नग्रीवा तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुड्भ्यां महासुरा एकवाह वक्षिचरणा केचित् दिव्यादुधा कृता छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धायुधुर्दिव्या गृहीत परमायुधान् ऋतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलया श्रिता कबन्धा छिन्न शिरसा खड्गशक्तिरेष्टिपानयः तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरा पातिते रतनागा स्वेरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्रा भूत्स महारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रवो मध्ये चासुरसैन्यस्य वाराणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिकानिन्ये क्षयं यथा वह्निस्त्रिं दारु महाचयं स च सिंहो महानादमुत्सृजन् धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणाम् अश्रूणिव विचिन्वति दिव्या गणेशतस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तत्सुरदेवा पुष्पवृष्टिमुचो दिव्यं जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यनां द्वितीयं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ तृतीयोऽध्यायः। ओथ ध्यानम्। ओम उद्यद्भानु सहस्रकांति वरुण क्षमां शिरोमालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपपटिं विद्यामवीतिं वरं हस्ताब्जे दत्तिं त्रिनेत्रविलसद्वक्तारविन्दस्त्रियं देवीं बद्धहिमांशु रत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ओम ऋषिर्वाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरा सेना निश्चक्षुरा कोपा जयो योद्धुमताम्बिकां स देवीं सर्वर्षेण ववर्ष समरेसुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदा तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयेव सरोत्करान् जघान तुर्गान् वानैर्जन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुसद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं बिभ्याद चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानमासुगे सच्छिन्न धन्वा विरथो हतासु हतसारथि अभ्यधावत्तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरा सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगान भुजे सभ्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य बफादेर्नन्दना ततो जग्राह शूलं स कोपाधरुन् लोचना चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यं महासुरा जाज्वल्यमानं तेजोभिरभिबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलमामुञ्चत तच्छूलं सतदा तेन नीतं स च महासुरा हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मुपतौ आदिगां गजारूढस्य अमरस्ति दशार्दना सोऽपि शक्तिमुमोचात दिव्यास्तामम्बिका दुर्तं हुङ्काराभियतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भगनां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोध समन्विता चिक्षेप चाम्राशूलां बाणे सदपिशाचिना तथा सिंहासमुत्पत्त्या गजकुम्भान्तरे स्थिता बाहुयुद्धेन युद्धे तेनोच्चैः दशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महिं गतौ युद्धातेति संरब्धौ प्रहारैरति दारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्त्या निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतमुदग्रस्य रणे दिव्या शिलावृक्षादिभिरहतः दन्तमुष्टिदलस्यैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापाते चूर्णयामाश्चोद्धतं वास्कलं भिन्दिपालेन बाणेस्ताम्रं तथा मुग्रास्य मुग्रवीर्जं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी विडालस्य शनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभो शरेण्ययमक्षयम् एवं संक्षीयमाने तु स्वसैन्यमहिषासुरां माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास्तान् गणान् कांस्यतुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांस्यदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानेकमभ्यधावत् सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततुम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्णमहितला शृङ्गाभ्यां पर्वतान्नुच्चांश्चिक्षेप च रणाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महितस्य व्यसीड्यत लाङ्गूलेन हतश्चावधिः प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गविभिन्ना स खण्डं खण्डं ययुर्घणा श्वासानिलास्ता सत्सो निपेतुर्नवसो चला इति क्रोधसमाद्मातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदा करोत् सा क्षिप्त्वा तस्य पार्श्वं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमायिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तथैवासु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकै तं खड्गचर्मणा सार्धं तथा सोऽभून्महागजः
करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निर्किन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामाश त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना नरर्दचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करे उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरं दिव्योवाच गर्ज गर्ज छनं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतित्रेव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः ऋषिर्वाच एवं मुक्त्वा समुत्पत्त्या सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननास तत्प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टपुस्तां सुरा देवीं सा दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर गंधर्व पत्यो नृतुश्चाप्सरो गणा। हम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके वनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर नाम तृतीयं श्री जगदम्बार्पणम् अस्तु। अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभायदां मौलिबध्यन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशकमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। ओम ऋषिर्वाच शक्रादयः सुरगणा नेतेति विरजे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिवले च दिव्या तां तुष्टभुः प्रणति नम्र शिरोधरां सा वाग्भे प्रहर्ष पुलकोदगं चारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिल देवमहर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु सुवानिशानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्रेः स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतदयां हृदये सुबुद्धे श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जातां त्वं नतास्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिविर्जमसुरक्षयकारी भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दिव्येषु देवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषेण ज्ञायसे हरिहरादिविरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्जसे त्वमत एव जनैश्वदा च या भुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्घ्य जुषां निधानाम् उद्गीतरम्य पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थयन्त्री मेधासि देवी विदिता किल शास्त्र सारा दुर्गासि दुर्ग भवसागर नवरसंगा श्रीः कैटभारे हृदये कृतादिभाषा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृता प्रतिष्ठा ईखत्साहसमबलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनुगत्तं कान्तिकान्तं अत्यद्भुतं रहितमातरुषा तथापि भक्तं विलोक्य सा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं वृपटिकरालामुद्यच्च सांसदिशच्छविजन्न सद्या प्राणान् मुमोच महिषासुतदेव चित्रं कैर्जिप्यते कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव जदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य देशम्मता जनपदेषु धनानि तेषां जशांसि न च सीदति धर्मवर्गादन्यास्तेव निवृत्तात्मज वृत्त्यधारा जेषां तदा विदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्यानि देवी शकलानि सदैव कर्माण्यत्याधृता प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रये विफलदारणु देवी तेन दुर्गे स्मृता हरस्य भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ताय विरते जगदुपैति सुखं तदैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तो मत्वेति नूनमयितान् विनयन्ति देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्मा सर्वासुरान् हरिकुजत् प्रणोखि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तो रिपुवोऽपि हि शस्त्रभूताय तं मतिर्भवति ते क्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकर्भिः स्फुरणैस्ततोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिभेन दिशो सुराणां जन्नागता विलयमंसुमतिन्दुखण्डा योग्यारणं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवी शीलं रूपं तथैतद्विचिन्त्यमतुल्यमन्ये वीर्यं च हन्ति तदेव पराक्रमानं वीरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयत्थं
केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुवः कार्जति हरिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापद्यानि स्वनेन च प्राच्यं रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थगुणानि ते रक्षास्मान् तथा भूमं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवशङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वथा ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यै कुस्मैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्रे तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणन्तान् सुरान् दिव्योवाच म्रियतां त्रिदशा सर्वे तस्मत्तो विवाञ्छितं देवावुचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं नेतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोदेयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः यस्य मर्त्यास्तवैरेभिस्त्वामस्तो सत्यमलारणे तस्य वित्तर्दिव्यवैर्धन्धारादिशं पदां विर्धयस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवीर्जगतोऽर्थे तथात्मना तथेति उक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तरिता नृपैत्येतत्कथितं भूपा सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयीते शनि पुनश्च गौरी देहात्सा समद्भूता यथा भवद्वधाय वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनि शुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारणे तच्छृणुषु मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सक्रादीय स्तुतिर्नाम चतुर्थं श्री जगदम्बार्पणम् अस्तु। ओम अथ पंचमोऽध्यायः ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्रऋषि महासरस्वती देवतानुष्टुप छंदा भीमा शक्ति ब्राह्मणी बीजं सूर्यस्तत्वं संवेद स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोगः ध्यानम् ओम घंटाशूलानि शंखमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दतिं घनान्तविलसच्चितांशुतुल्य प्रभां गौड़ीदे समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ओम क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनि शुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचीपते त्रैलोक्यं यगभागा सहृता मदवलासयातावेव सूर्यतं तद्वदधिकारं तथेन्दवं कौबेर्मदजाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वाणी कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता हिताधिकारा त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजितां दयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्स्वस्मृताखिला भवदां नाशिष्यामि तत्क्षणात् परमापद इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टवो देवा नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्याति रौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यै कीर्त्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः
चित्रूपेण या कृष्णामे तद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुधासुरे पूर्वमभिष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु साना शुभेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभियन्तु चापदया संव्रतं चोद्धत दैत्यतापिते रश्माभिरीसा च सुरे नमस्यते या च स्मृता तत्सन्मे वहन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिरिशिरुवाच एवं अस्वादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्यायो तो ये जाह्नव्या निपणन्दन सा ब्रवीतान् सुरान् सुभ्रूर्भवद्भिरस्तु यतेऽत्रका शरीरकोस्तस्यास्या समुद्भूता ब्रवीत् शिवा अस्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्य निराकृते देवैः समेतैः शमरे निशुम्भेन पराजिते शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निश्रिताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्शचण्डो मुण्डस्य भृत्यो शुम्भनिशुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्यातातीव सुमनोहरा काप्यास्ते श्रीमहाराज भाष्यन्ति हिमाचलं नैव तादृक्वचित् रूपं दृष्टं किञ्चिदुत्तमं ज्ञायतं काप्यशो देवी गृह्यतां चासुरेश्वरा स्त्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योत्यन्ति दिशस्त्विषा साधु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणियो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गिरे ऐरावता समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजात तरुश्चायं तथैवोच्चैः स्रवाहयः विमानं हंस संयुक्तम् एतत् तिष्ठति तेऽङ्गने रत्नभूतमिहानीतं यदा सिद्वेदसोद्भूतं निधिरे समाः पद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्कनिं ददो चाब्दिर्मालामम्लान् पङ्कजां छत्रं देवारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथा यं चन्दनवरोजः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्युरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरिस्त्वया हृता वासः शरीरराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातया वह्निरपि ददो तुभ्यामग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिर्वाच निशम्येति वचा शुम्भा स तदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामा सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाप्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा जत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां तथा प्राहस्लक्षणं मधुरया गिरा दूतो वाच देवी दैत्येश्वरा शुम्भा त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतो हम प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागता अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारि स यदा शृण्वतत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा यज्ञभागानहं सर्वान् उपासनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वस्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमत्नोद्भूतमस्वरत्नं ममामरे उच्चे सर्वसंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नं भूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वामवानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रायै इदं धार्यते जगत् देव्यो वाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं तत्र जत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा जाकृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरा मां जित्वा किं चिरेणात्र पानिं गृह्णातु मे लघु दूतो वाच अवलिप्तासिमेवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये का पुमान् तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधे तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्जेषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयि भुक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षं निर्धूत गौरवामागमिष्यसि देव्योवाच एवमेतद्बलि शुम्भो निशुम्भस्याति विद्यमान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे जदनालोचिता पुरा शत्वं गच्छ मयोक्तं ते जदे तत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्त्वं जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये दैत्य देव्यादूत संवादो नाम पंचमः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। षष्ठोऽध्यायः ध्यानम् ओम नागाधीश्वरविष्टां फणिफलोत्तं सोरुरत्नावली भास्वते लतां दिवाकर्णे वामनेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तयो मृषिर्वाच इत्याकर्णवचो दिव्याः सदूतो मर्षपूरिता समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरा तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुराट् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् अधिकं धूम्रलोचनं
हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्य परिवारितः तामाराय बलात् दुष्टां केशाकर्षन् विह्वलां तत्परित्राणदः कच्चित् यदिवोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्वे भुवारिशिर्वाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनामृतः षष्ट्या सहस्राणां मसुराणां द्रुतं ययो स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत् प्रीत्याद्य भक्तिमद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयं येषा केशाकर्षन् विह्वलां दिव्योवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहं ऋषिरुवाच इत्युक्ता स्वभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचना ओंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अतत्वद्धं महाशैन्यं मसुराणां तथाम्बिका बभर्ष सायुकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरस्वधैः ततो धुत्सटः कोपात् कृत्वा नादं शुभैर्भं पपातासुरसेनायां सिंहो दिव्या स्ववाहनः कांसितकरप्रहारेण दैत्यानासेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जगान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैर्कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशीर्षा कृतास्तेन तथा परे पगोचरुद्रं कोष्ठादन्येषां उद्केसराचनेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा दिव्या वाहनेनाति कोऽपि न सुत्पातमुसरं तमसुरं दिव्या नेतं धूम्रलोचनं बलं च क्षतं कृतं देवी केसरिणा तथा च कोपदित्याधिपति शुम्भाप्रस्फुटिताधरा आज्ञापयामास ततो चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्डे हे मुण्डवरे बहुवी परिवारितो तत्र गच्छत् गत्वा च सासमानीयतां लघु केशस्वाक्यवद्भावा यदि वा संशयो युधे तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यामतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामताम्बिकां जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके वन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुमृसुमसेनानि धूम्रलोचनां षष्ठा श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। सप्तमोऽध्यायः ओं ध्येयं ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकल्पटितं सिन्वतीं श्यामलाङ्गीं नस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे सशिशकलधरां गलकलिं वादयन्तीं कहलाराबद्धमालां नियमितबिलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुमदां चित्रकूटभासिभालां अमृशिर्वाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याः चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यता युधा ददृशुस्ते ततो देवी मीखदासं व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां सवादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यता पृष्ठचापासि धरा तथान्येतत् समीपगा तथा कोपं चकारोच्चैरम्बिका तान् नरीन् प्रति कोपेन चास्यावदनं मसी वर्णमभूत्तदा भ्रुकुटिकुटिला तस्या ललाटफलकाद्रुतं कालीकरालवदना विनिष्कान्तासि पासिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्म परिधाना शुष्कमांसाति भैरवाति विस्तार वदना जिह्वालनन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापुरिदिङ्मुखा सा वेगेना विपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्सुरारीणाम् अभक्षयत् तद्बलं पार्ष्णिग्राहं कुशग्राह्योद्घण्टा समन्वितान् समादायिक हस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव जोधं दुर्गैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दर्शनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम् एकं जग्राह केशे सुग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यां मूरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महात्राणि तथा सुरे मुखेन जग्रारुसात् दशनैर्मुखितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यानन्यास्याताडयत् तथा असिना नेता केचित् खट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो भितुद्रावा तां कालीमतिभीषणां सर्वर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षिं तां महासुरः छादयामाश्चक्रेश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विस्मानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादनी कालिकरालभक्तान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद् भूमोषा खड्गाविहतं रुषा हत्सेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहाविर्जं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टः समिश्रमप्येत्य चण्डिका मया तवात्रोपेतो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचा यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डीति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि ओं जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके वन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डनां सप्तमा श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथाष्टमोऽध्यायः रक्तबीजवध ध्यानम्
ओम अरुणाम करुणा तरंगिताक्षम धृतपासं कुसुमांचापहस्तां मणिमाधविरावृतां मयूखैरहमित्य विवावै भवानी ममृषुर्वाच चण्डे च निते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु चैतेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेता शुम्भ प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्यानि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेया तथा सुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्य सुरपति शुम्भो भैरव शासन निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयन्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमति भीषणं ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादमति विकृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादम् अंबिका चोपबृंहयत् धनुर्ज्यासिन् घण्टानां नादापूरितदिङ्मुखानिनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानुनातं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूपा विनाशाय सुरद्विषां भवायामर्सिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विता ब्रह्मेश गो विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैः चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेवी तच्छक्तिरस्राञ्जद्धुमायेयो हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणिषा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्रलेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमव्यायो दैत्यानम्बिका घोरोपिनी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा सार्ग खड्गास्ताभ्युपायेयो यज्ञवाराहमतुरं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्यायेयो तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुं नारसिंहेन सिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत् शटाक्षे पक्षिप्त नक्षत्र संहति वज्रहस्ता तथैव इन्द्रिगजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकां ततो देवी शरीरातो विरष्कान्तादिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सदनिनादनी सा चाह दुर्मजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं सुमनिशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितो ये चान्द्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजा यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छता बलाबले पादच्छेद भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणा तदा गच्छत्यप्यन्तो मच्छिवापिशतेन वा यतो नियुक्तो दोत्येन तया दिव्या शिवा स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्तथा साक्षातिमा गता ते पृषुत्वा वचो दिव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमरका पूरिता जङ्गुर्जत्रकात्यायनि स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सर्वशक्तिरिष्टिवृष्टिभिर्वर्कुरुद्धता अमरकास्तां देवी ममरारय सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरस्वधान् चिच्छेदलीलयाधमाता धनुर्मुक्तैर्महे शुभे तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत् तदा कमण्डलो जलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाक्रोच्छत्रुन् येन येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रियकुलिसपातेन सत्सो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारितः पृथिव्यां रुधिरोघ प्रवर्षिणः तुण्डप्रहार विध्वस्तादंशाक्षत वक्षसः बारह मूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिता नखिर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजो नादापूर्ण दिगंबरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः वेदो पृथिव्यां पतितांस्तां सखादा सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा विपायैर्विद्यर्नेषुर्देवारि सैनिका पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् जोद्धुमव्यायो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्जदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणः सदा सुरायुधे सा गदा पाणिरिन्द्र शक्त्या महासुरः ततश्चेन्द्रिय स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलसेन हतस्यासु बहुसुस्राव शोणितं समुत्तस्थस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्ध शस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो जदा भवाः रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समृचेनं चक्रेणाभिजगानः गदयाटाडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुद्रस्राव संभवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैः महासुरैः सत्याजगान कौमारी वाराही च तथा सिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदयादित्य सर्वाय वाहनत् पृथक् मातृ कोप समाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि प्रपातजो विरक्तो भस्येना संच्छत्सो सुरा दैश्चासुराशिक्षं भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजगमुरुत्तमं तान् विषण्णां सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डी विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्शस्त्रपात् सम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दुः प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चरणने तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष जय
क्षयं दैत्य क्षीण रक्तो गमिष्यति भक्षमाना त्वया चोग्रानो चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदा पात्वल्पिकामभि तस्याः तस्य देहात् तु बहुशुस्राव शोणितं सतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति सुमुखे समुद्गता यस्या रक्तपातान् महासुरा तास्य खादा चामुण्डा बभो तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं स्वपपातमहि पृष्ठे शस्त्रशृङ्ग समाहतः निरक्तस्य महिपाला रक्तबीजो महासुरा ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्ते दशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता श्रीमदोद्धतं जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमः श्रीजगदम्बार्पणम् अस्तु। नवमोऽध्यायः निशुम्भवध। ओम बंधुक कांचननिभं रुचिराक्षमालं पाशंकुशौ च वरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रामर्दाम्बिके समणिसम्भपुराश्रयामि। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम दिव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं। रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भोजत्कर्माणि शुम्भस्याति कोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भस्य हतेस्वन्यसुजाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्कमुद्मान् अभ्यधावन् निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्यागतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरा सन्दष्टोष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः। आजगां महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमतिवासी दिव्या शुम्भनिशुम्भयोः सरवर्षमतिवोग्रं येघ्योरिवर्षतो छिच्छेदांस्तान् छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करे ताडयामाश्चाङ्गेषु शस्त्रोगैरसुरेश्वरो। निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम् अताडयन् मूर्धने सिंहं दिव्यावाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणास्यमुत्तमम्। निशुम्भस्यासु चिच्छेदा चर्म चाप्यष्ट चंद्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप्सो सुरातामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपादमातो निशुम्भोता शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयता विद्यात् गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या शूलेन भिन्ना वस्मत्वमागता ततः परस्वस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवमाहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन् निपतिते भूमो निशुम्भे भीम विक्रमे भ्रातर्यति विसंक्रुद्धा प्रयो हन्तुमं विकां सरथस्थस्तथात्युच्चे गृहीत परमायुधे भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्यासे संबभौ नव। तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्या शब्दं चापि धनुषश्चकाराति विदुषाम्। पूर्यामास कक्बो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवध विधायिना ततः सिंहो महानादेस्त्याजितेव महामदे पूर्यामास गगनं गां तथैव दिशो दश। ततः काली समुत्पत्य गगनं क्षमामताडयत् कराभ्यं तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः। अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरप्सरास्त्रेषु शुम्भाकोपं परं ययो दुरात्मंस्तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका जदा तदा जयत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः। शुम्भेनागते या शक्तिर्मुक्ता ज्वालाति भीषणा आयान्ति वह निष्कूटाभासा निरस्ता महुल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं। निर्घात निश्वनो घोरो जित्वा नवनीपते शुम्भमुक्तान् छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् छरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः सत्सोतसहस्रशः। ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगान तं स तदा विहतो भूमो मूर्छितो निपपातः। ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकारमुखः जघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूणामहितं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम्। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकान् शतान्। ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः। तस्यापतति वासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतो परः। महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरस्य छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि। तथा सिंहस्य खादोग्रं दर्शा छुण्ड शिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान्। कौमारी सत्य निर्भिन्ना त्यचिन्नेसुर महासुरा ब्रह्माणि मंत्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृता। माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि। खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चेन्द्रिय हस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचित् विनेसुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिता सा परे काली शिवदूती मृगाधिपति। ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भ नाम नवमः श्री जगदम्बार्पणम् अस्तु। अथ दशमोऽध्यायः शुम्भवधः।
ध्यानम ओम उत्तप्तेम रुचिराम रविचंद्रवाणी नेत्रां धनुस्सर्जुतां पुष्पाशूलं रम्यैर्भुजैः सदतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् अमृतशिरोवाच निशुम्भं नेतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वच बलाबलेपा दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्भमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति माननी देव्यो वाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पसीता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतया ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनो जग्मुरेके वासी तदाम्बिका देव्योवाच अहं विभूत्या भवेर्हि रूपैर्जदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजो स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः प्रवृत्ते युद्धं देव्याः सोमस्य चोभयो पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणं सर्वर्षैस्थिते शस्त्रे शस्त्रास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमबुद्भूय सर्वलोकभयङ्करं दिव्यानस्त्राणि सत्सो मुञ्चे यान्यताम्बिका भवन्यतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जलीलिये वो ब्रह्मकारोच्चारणादिभिः ततः सरस्वतीर्देवी माच्छादयत् सोऽसुरा सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेसुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय सच्चन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरा तस्यापतते वासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः सितैर्बाणैः बाणैश्चर्मचार्ककरामलं हताश्व स तदा दैत्यश्चिन्न धन्वा विसारथे जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यत चिच्छेदापततस्तस्यामुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तामुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पादयामास हृदये दैत्यपुङ्गवा दिव्यास्तं चापि सा देवी तले नोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभियतो निपपात महीतले स दैत्यराजा सहसा पुनरेव तथोत्थिता उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थिता तत्रापि सा निराधारा युधेतेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्या चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धा मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणी तले स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः व्यधावत् दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छयात्मा यान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गतासु पपातुर्भ्यं देवी शूलाग्रवीक्षता चालयन् सकलां पृथिवीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां तथा प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमति वाप निर्मलं चाभवन्नभा उत्पातमेघा शोल्काजे प्रागा संस्थे समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसा बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगो अवादयंस्तथैवाङ्गे नैऋतुस्साप्सरो गणाः बभूः पुण्यास्तथा वातासु प्रभो बुद्धिवाकरः जज्जलुस्साग्नयः शान्ता शान्ता दिग्जनितस्वराः ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनाम 10वां श्री जगदम्बार्पणम् अस्तु। एकादशोऽध्यायः अथ ध्यानम् ओम बालड़ विद्युतिमिन्दु किरीटां तुंगकुचं नयनत्रयुक्तां स्मेरमुखीं वरदां पुष्पासा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशिम् ओम ऋषिर्वाच दिव्याते तत्र महासुरेन्द्रे चन्द्रासुरावानि पुरोगमास्तं कात्यायनीं तुष्टवरिष्ठलाभात् विकास्य वक्त्राब्ज विकासितासा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थित्या त्वयि तदाप्यायते कृष्णमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्त वीर्जा विश्वस्य बीजं परमास्य माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना विमुक्तिहेतुः विद्याः समस्ताः सबदेवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयि कया पूरितं वै एतत् काते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्तिः सर्वभूतायदा देवी सर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वमस्तुता स्तुते का वा भवन्तु परमोक्तया सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदये संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी संभक्षणिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महाविषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूर कुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंखचक्र गदा सांग गृहीत परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतो ब्रह्माचक्रे धर्षोदित वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंह रूपेण उग्रेण हन्तुं दैत्यान्
कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महाभद्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्तानरिचन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूति स्वरूपे नाथ दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दशाकालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुनमधने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिभा प्रभितां सिनियते त्वं रसीदे से नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते तत्ते वदनं सौम्यं लोचनद्रय भूषितं वातु न सर्ववेदिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते ज्वालाग्रालमध्यपुरमशेषासुरशूदनं त्रिशूलं वातु नो वीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ते तेजांसि स्वनेना बुढिया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानि वा सुराशिग्वसाभङ्ग चर्चितस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं रोगान् शेषान् पञ्चि दुष्टानुष्टातु कामां सकलान्वेष्टां त्वामाश्रितानां नैपन्नराणां त्वामाश्रिताया सहितां प्रयान्ति एतत् कृतं यत्कथनं दयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरणैकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु चकातो धन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदेव विश्वम् रक्षांसि यत्रुग्रभिशाश्च नागा यत्रारयोधस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाग्निमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया जे त्वयि भक्ति नम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरि भीतिर्नित्यं यथा सुरपदा तदुने विशद्या पापानि सर्वजगतां रसमं नयासु उत्पातपाक जनिता समोपसर्गान् प्रन्तारां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्थिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव दिव्योवाच वरदाहं स्वर्गनावरं जन्मन सच्चदातं प्रणोदं प्रयच्छामि जगदामुपकारकं देवाहुचु सर्वाबाधा प्रश्मनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं देव्योवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भनिशुम्भस्यैवान्या उत्पत्स्यते महासुरो नन्दगोप गृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा ततस्थो नाशिष्यामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरक्त्यतिरौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्जानिष्यामि विप्रचित्तान् सुदानवान् भक्ष्यन्त्या शतानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढ्मी कुसुमोपमा ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयस्य शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनं वसे मुनिभिः संस्तुता भूमोषं भविष्यामि ययो निजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षिमिति मां तथा ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेशमुद्भवे भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टे प्रान्धारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मा मुनिः सर्वे स्तोष्यन्त्या नम्रमूर्तया भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाक्षस्त्रैलोक्ये महाबाधं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकाः स्तुताः स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधादानबोधा भविष्यति तदा तदावतीर्जाहं करिष्यामि ऋषञ्चयमं जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्त्रे देवी महात्म्ये दिव्या सुदीर्णाम एकादशों श्री जगदम्बार्पणमस्तु अथ द्वादशोऽध्यायः ध्यानम् ओम विद्युद्धाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालिखेटविलसद्धस्ताभिरासेविदां हस्तश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजेयं देव्योवाच एभिस्तवश्च मां नित्यं स्तोष्यति यः समाहितः तस्यां शकलां बाधां नाशिष्याम्य संशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वत् वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैक्षेतसः श्रोष्यन्ति चैव जे भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा नराजितो न शस्त्रानल्तो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मात् ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्यैनं हि तत् उपसर्गान् शेषान्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं समयेन मम जत्रे तत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मम तच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यं एव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रत्यक्षस्याम्यहं प्रेत्यावानि होमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां मम तन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा मम तन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भया पुमान् नृपवा संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गासमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च निभृदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहा विभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणम्
परमुत्तमं दुर्वृत्तानां अशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं वेतनमाहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमै विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशं मन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण जा प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे सुचरितं जन्म दुष्ट दैत्य निवर्हनं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुत्यो याश्च याश्च ब्रह्मर्षभिः कृता ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थिता पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोडासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा अस्मरन् ममैतच्चरितं नरमुच्ये सङ्कटात्मव प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मृतश्चरितं ममारिषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा तस्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारं यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रोड्विनिहतारयः दैत्याश्च दिव्यानि हिते शुम्भे देवरिपो युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महुग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं तैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तैतत्सकलं ब्रह्माण्डमनुजेश्वरा महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यदा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदा गृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रान् स मतिं धर्मे गतिं शुभां जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके अन्वन्तरे देवी महात्म्ये फलस्तुतीर्णां द्वादशं श्री जगदम्बार्पणमस्तु ओम त्रयोदशोऽध्यायः अथ ध्यानम् ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशङ्कुशवराभिर्धारयन्तीं शिवां भजेऽहं श्रीवाच एतते गतं भूपदेवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी एदं धार्यते जगद्विद्या तदेव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेश्वरस्य सततेवान्ये विवेकिनां मोह्यन्ति मोहितास्य वा मोहमेष्यन्ति चापरेतां मुकुहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता स नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेयवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा श्रुतः स नराधिप प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसितव्रतं निर्भिन्नोति मत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तप्ते स च वैश्वो महामुने संदर्शनार्थम् अम्बाया नदीपुलिन संस्थितः स च वैश्वस्तपते पे देवी सूक्तं परं जपन्तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महिम् आढानां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो ददतुस्तो बलिं चैव निजघात्रास्य गुक्षितम् एवं समाराधयतुस्त्रिभिर्वर्षैर्जतात्मनः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका दिव्योवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूपा त्वया च कुलनन्दना मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेयवाच ततो वव्रे नृपो राज्यमभिभ्रंशन्यजन्मनि यत्रैव निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विन्नमानसा ममेत्यहमिति प्राज्ञा सङ्गविच्युतिकारकं दिव्योवाच स्वल्पैर्होभे नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुणस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतस्य भूयशं प्राप्य जन्मदेवादिवस्वतः सावर्णिकोर्णां मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवारे त्वया यश्चावरुस्मत्तो विवाञ्छिता तं प्रयच्छामि संसिद्ध्येदज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेयोवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तरिता सद्यो भक्त्या ताभ्याम् अभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियार्षवा सूर्या जन्म समासाद्य सा वर्णिर्भविता मनु एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियार्षवा सूर्या जन्म समासाद्य सा वर्णिर्भविता मनु क्लिंगं मा जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके अन्वन्तरे देवी महात्म्ये सूरत वैश्ययुर्वरद प्रदानं नाम त्रयोदशं श्री जगदम्बार्पणमस्तु ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु जदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। इस प्रकार 13वां अध्याय का पाठ संपन्न। अब जो है नवार्ण, अंतिम में नवार्ण। श्री गणपति जयति ओमस्य श्री नवार्ण मंत्र श्रवणं विष्णु रुद्राऋषि गायत्री श्री गणपत छंदांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता बीजम हिंसक्ति क्लीं गिलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगा। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्रेभ्यो नमः श्री गायत्री श्री गणष्टुप छंदोभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय बीज नमः गुह्ये हिंसक्ते नमः पादयो। ओम क्लीं गिलकाय नमः नाभो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं अनुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्णेभ्यां नमः क्लीं मध्यमाभ्यां नमः चामुण्डायै नामिकाभ्यां नमः विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे कर्तल कर्ष्ठाभ्यां नमः
ओम ऐं हृदयाय नमः ओम ह्रीं शिष्य स्वाहा ओम क्लीं शिखाय वकटम चामुंडाय कवचाय ओम विच्चेन तत्रय वकट ओम ऐं ह्रीं चामुंडा विचाराय पट ओम ऐं नमः शिखाय ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रम क्लीं नमः वाम कर्णनेत्रे ओम चांग नमः दक्षिण कर्णम ओम नमः वाम कर्णम डांग नमः दक्षिणासापुटे ऐं नमः वाम नासापिटे ऐं नमः मुख्यम चैं नमः गुह्ये ओम ऐं प्राच्येन ओम ऐं आग्नेयेन ओम ऐं दक्षिणायन ओम ऐं नैऋत्येन ओम क्लीं प्रतीच्ये नमः ओम क्लीं प्रतीच्येन ओम क्लीं वायव्येन ओम चामुंडाय उदिच्येन ओम चामुंडाय षण्ड्येन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ऊर्ध्वायेन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे भूम्यै नमः ओम खड्गं चक्रगदेषु चापरिकां चूलं भुजण्डीं शिराशङ्कं सन्दातिं कलसेनानां सर्वाङ्गभूषाभितां नीलास्मद्युतिमात्पादस्कां सेवे महाकालिकां यावत्स्वपिते कडारु कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् अक्षस्रक्पर्शं गदेषु कुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं चूलं पाशुदर्शने च दत्तिं हस्ते प्रसन्नारणं शिवे षाढ्यमर्दिनीं महालक्ष्मीं सर्वजस्थितां घण्टासुकुलालानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायुधं हस्ताब्जैर्दत्तिं घनान्तविलसच्चिदां सुतुल्यप्रभां धूरीदेशमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामद्र सरस्वतीमनुवदे शुंगादिदैत्यार्दिनीं। फिर जो है माला पूजा ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः ओम बाले महामाये सरस्वती स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्तस्मान्नस्यसिद्धा भव ओम अभिघ्नं कुरु माल्यत्वं गृह्णामि दक्षिणे कले जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसेदं सिद्धयम् अक्षमालाधिपते सुसिद्धिं देहि देहि षट्मन्त्राशादि साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय मैं स्वाहा। फिर जो है 1008 या 108 या 1000 जो है 1008 जप करना चाहिए नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे ओम ह्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम शंकरनेभ्यां नमः ह्रीं मध्वाभ्यां नमः कामनामिकाभ्यां नमः ऐं गणेशकाभ्यां नमः ह्रीं चण्डिकायकर्तकृष्टाभ्यां नमः ओम खड्गने शून्ये वरागने जगने तथा संगने जामने मानवसने परिगारदां हृदयाय नमः ओम सूर्यन पायनो देवीवाय घड़ियं जामिके घंटा सुरनापाय जावजानि सुरन जाव जैसे स्वाम राज्यं रज प्रतिचाम च चण्डिके रज दक्षिणे वामने सुरज उत्तरचाम देवस्वरीं शिखाय वकट ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति तेजां चाते घोराणि रक्षात्मक तथा ओम कवचाय ओम खड्गशूलगदानि यानि चातानि तेमिके करपल्लव संगे रस्मान् सर्वदां नता देह भोगणं सर्वस्वरूपे सर्वेश्वर सर्वशक्तिधरनिधे भयवस्त्राय देवी दुर्गे देवी नमस्तुते नमस्ताय भट्ट विद्युतां सोम प्रभामणि कोते स्कंदतां वैष्णव कन्या विकरवाल केट विंशदस्ता विरासे विनमस्ते चक्रदासे केट विस्काम जाम चापं गुणं तर्जनिं विप्राणामं लात्मं सिद्धरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ओम अहमित्यष्टस्य सूक्तस्य भागं प्रणेदिसे सच्चे सुखात्मक सर्वगत परमात्मा देवता दिव्यारिचो जगते शिक्षाणां दशोत्तंदा देवी महत्पाठे विनियोगा ओम सिंहस्थ ध्यानम् ओम सिंहस्तास्य शेखरा मर्कत प्रक्षे चतुर्वेद भुजय संकम चक्र धनुसरां सदाति नेत्र सर्वे शोभिता मुक्तांगाधार कंकरणनत कांचीरणं उपड़ा दुर्गा दुर्गति हारिणी भवतु
तस्मोल्लसत्कुण्डला देवी सूक्तम् ओम अहं रुद्रवीर्वस्वेश्वरामि अहम् आदित्ये ऋतविश्वदेवै अहं मित्रा वरुणो वा बिभर्मि अहम् इन्द्राग्नि अहम् अश्विनो वा अहं सोममानसं बिभर्मि अहं त्वष्टारमुत्पूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राप्ये यजमानाय शृण्वते अहं राष्ट्रे संगमनि वसूनां चिकितुषे प्रथमा जज्ञियानां तामा देवाभ्यदधु पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूरिया वेशयन्तीं मया सु अन्नमत्तिजो विपश्यति जः प्राणीति ज इं शृणोति उक्तम् अमन्तवो मां तु पक्ष्यन्ति श्रुधे श्रुतसद्दिवं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत्मानुषेभिः जं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे अन्तबाहु अहं जनाय समदं कृणोमि अहं द्यावा पृथिव्या विवेश अहं सुवितर्मसमूर्धन्वं ज्योनिरप्सन्तः समुद्रे ततोऽपि तुष्टे भुवनानि विश्वतामुं द्यामस्मनुपस्पृशामि अहमेव पाति विप्रवाम्यारम्माणा भुवनानि विश्वा परो दिवापरेण पृथिवी तावती महिना सम्बभूवां यदक्षरपदभ्रष्टमात्राहीनं च तद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी अपराधसहस्राणि ज्ञान्ते हरनिशम्भयादाशोऽयमिति मामत्वात्मन् परमेश्वरी आवाहनं न जानामि न जानामि सर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।